morning. My name is Anil. Today we are going to discuss second part of first chapter, matter in our surrounding. So in this topic we will discuss change of state of matters. So we know that there are three states of matter. Solid, liquid and gas, or you can say vapor. So today we will discuss how we can change these states into each other or conversion of states. So let us discuss what are the factors which affect change of states. Change of states, factors. तो फर्स्ट फैक्टर वो होगा स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर. स्पेस बिटवीन पार्टिकल. सेकेंड जो फैक्टर है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और जो थर्ड फैक्टर है दैट इज काइनेटिक एनर्जी of particles. इन तीन फैक्टर के बेस पे हम डिस्कस करेंगे कैसे जो स्टेट्स हैं उनको हम एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड वी नो दैट these change of states depend upon temperature and pressure. तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे टेम्परेचर और प्रेशर का जो इफेक्ट है वो स्टेट्स के अंदर कन्वर्जन लेके आता है. सो और इनके चेंज होने पर इन फैक्टर्स के अंदर क्या चेंज आते हैं वो डिस्कस करते हुए हम चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर एक्सप्लेन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस solid change into liquid. तो मैं एक इजी से एग्जांपल लेंगे. Ice is a solid form of water and we have liquid water. So when solid change into liquid, that is known as melting, or you can say fusion. The change of solid into liquid is known as melting and we can say fusion. So when we give heat to solid, so this ice will start to melt and change into liquid water. So what happens when we heat ice? So when we give heat to ice, what happens? This heat is gained by the particles, and when this heat is gained by the particles, the kinetic energy of particle increases, and when the kinetic energy of the particles increases, they try to move apart from each other, and then what happens? The force of attraction between particles decreases. क्या होगा? Force of attraction between the particles will start to decrease, and then because of this, space between particles increase, and then solid change into liquid. इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. We know that in solid the particles are close to each other, and when we give heat to solid, that is we have taken ice. So what happens? These particles gain heat
and when they get heat, the kinetic energy of the particle increases, so they start to move away from each other, and when they move away from each other, the force of attraction between them decreases and the space between them also increases. So what happens? ये कंडीशन हो जाएगी, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सो ऐसी स्टेट जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होती है वो क्या कहलाएगी? लिक्विड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, स्पेस ज्यादा है, ओके, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, सो इट चेंज इनटू लिक्विड। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस another example of change of liquid into vapor. Okay, so next example हम लेते हैं वो है liquid change into gas form. इसमें भी हम वही फैक्टर एक्सप्लेन करेंगे. So if we give heat to liquid, it will change into gas. And this is known as vaporization. इसको हम क्या कहेंगे? Vaporization, or you can say boiling. Boiling कैसे? So वही फैक्टर को हम ध्यान रखते हुए इनको एक्सप्लेन करेंगे. Then when we give heat to our liquid, we have water, or gases or vapors of water. When we give heat to the liquid, and we have taken water, तो होगा क्या? The particles of this liquid gain heat and the kinetic energy of the particles increases. और उसके रिजल्ट में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो दिस व्हेन दे गेन काइनेटिक एनर्जी, सो द पार्टिकल्स स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. और जिसके कारण द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between particles, it decreases. Same thing. And when force of attraction between the particle decrease, they move apart, the space automatically it increases. तो space जो होगी increase होगी और liquid, and then liquid will change into gaseous form. Same हमने वही factor explain किए. हमने सिर्फ हीट को एक्सप्लेन किया है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन लिक्विड. तो इसके बेस पर हमने एक्सप्लेन किया हाउ वाटर चेंज इनटू वेपर फेज. नाउ द थर्ड वन, नाउ वी विल एक्सप्लेन द रिवर्स. मींस नाउ वी आर गिविंग हीट टू द लिक्विड, नाउ वी विल डू द रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग. Now we have gas form, or you can say vapor form, and it will change into liquid, water. इसमें हम क्या करेंगे? जो टेम्परेचर है या जिसको हम कह सकते हैं हीट है, इसको हम डिक्रीज करेंगे. And this process is known as condensation. So vapors will change into liquid by decreasing the temperature. So what happens when we decrease the temperature? So when we decrease the temperature, the kinetic energy of particle decrease. तो जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया था इस एग्जाम्पल में, वो सॉलिड टू लिक्विड के एग्जाम्पल में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे, हीट दे रहे थे. अब इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर या हीट को हम कम कर रहे हैं, और जिससे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी
particles will decrease, and when kinetic energy of the particles decrease, then force of attraction will increase, and when the force of attraction increase, the particles start to move towards each other. Then particles start to come closer to each other, and as a result, the gas particles change into liquid. So next जो हम करेंगे फोर्थ वन वो होगा लिक्विड टू सॉलिड. ओके, इसको हम क्या कह सकते हैं, फ्रीजिंग, और ये कैसे सोलिडिफिकेशन. Now when we have a liquid, suppose we have water, liquid water, and it will change into ice. This is known as freezing. तो इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, इसमें भी हम हीट को डिक्रीज करेंगे, या हम कह सकते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे. और जैसे ही हम वही फैक्टर के ऊपर बात करेंगे, जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, क्या होगा दोबारा से, kinetic energy of particles decrease होगी, force of attraction वो भी क्या होगा, increase होगा, and space between particles वो भी क्या होगी, increase. As a result of this, liquid will change into solid. तो हमने 4 एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए यहाँ पर. फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स में हमने क्या किया, हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, देन लिक्विड चेंज इनटू वेपर, एंड देन we have done reverse, vapor change into liquid, and last liquid change into solid. इन 2 एग्जांपल्स में हमने टेम्परेचर कह सकते हैं या हीट को इंक्रीज किया, और इन 2 एग्जांपल्स में हमने हीट को डिक्रीज किया. ठीक, अगर इनका हमें थोड़ा सा एक माइंड में बनाना चाहें तो बना सकते हैं. कैसे, suppose we have solid, then we have liquid and change into vapor. So solid change into liquid, that is called melting, and when liquid change into vapor, that is called vaporization. And these are the example of increasing temperature or heat. So when you do the reverse one, vapor change into liquid, this is example of heat increase होगी, and now here heat will decrease. Example of decreasing heat, vapor change into liquid, and then liquid change into solid. Okay, so these 2 examples are of decreasing temperature. Vapor change into liquid and liquid change into solid. So these are the 2 examples in which we have decreased the temperature or decreased the heat. So in next video we will discuss about the latent heat and what are the factors